శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थम उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्यमुखेन अहंकारिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. చలాదీశం శ్రీవేంకటాచలాదీశం శ్రీయాత్యాసితవక్షసం ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் அகம்பஜே என்று அந்த திருமலையப்பனை சேவித்துக் கொள்ளலாம். பக்தர்களே, இன்று விசேஷமான நாள், பரம ஏகாதசி என்று கூறுவார்கள். வைகாசி மாதத்திலே வரும் வளர்ப்பிறை ஏகாதசி இன்று பரம ஏகாதசி மற்றும் அஸ்வினி நட்சத்திரம் வியாழக்கிழமை என்கின்ற குருவாரம். பெருமாள் காலையிலே நேத்திர தரிசனத்திலே நமக்கு சாட்சாத்காரம் அளித்து, இதோ இப்பொழுது கல்யாண உற்சவத்திலே நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் பெருமாளை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. சேவிக்கலாம் அந்த எம்பெருமானையும் பிராட்டிமார்களையும். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பிராட்டிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை சேவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து அந்த கைங்கரியங்களான விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வச்சனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது. रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. प्रतिस्मृतिनिधे पूर्णं शास्त्रकल्लालसङ्कुलं विष्णुभक्त्यदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नार्णवं प्राणानायम्य. ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं
ఓం దత్సదుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ దేవమా భోజ్యోతిరసం తం బ్రహ్మ భూర్భవస్వరం అస్యాం శబ్దవస్య దేవస్య భవతో నారాయణస్య హ్యః పదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల ప్రతిపరిస్నా సర్వతంత్రపుషుత్తం శాంతత్వం స పుణ్యావచకర్మరిష్యన్ ఆదో నిర్విఘ్నేన సమాప్యర్థం విశ్వక్షేణారాధనం తదంగపూర్వే కరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారాసపశ్యమాంజేషు సరస్వరిపూర్దేశో అవబృహ్ణన్ పరిపాదేశే గృణం తాం శర్మ ఇదమాపశుభాశుతమా శాంతా శాంతమా శుభాశుతమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమాం తాం త్రసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పతా సూర్య సరస్వీ ఆపో వాయుధం సర్వం విశ్వాభూతాన్యవ ప్రాణాపాప పజవాపో నమాపో సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందావిశ్వాపో జ్యోతివిశ్వాపో యజవిశ్వాప సత్యమాప సర్వాదేవతాపో పూర్భస్వరాపోం అస్మిన్ కుంభేంగా శ్రీథనావాయామి యదేశతం వృణే సహస్రం విజ్ఞాపాడావిదాస్పుత్ర తేభ్యోనందరస్వతాది విష్ణురిష్వే దేవాం చంద్రమతస్య వరుణమావాహయామి బృహస్మావాహయామి రిక్తాం బ్రదరమావాహయామి యాదస్పతిమావాహయామి వరుణాయ నమః వరుణస్య ఇదమాసనం వరుణాయ నమః ఇదం పాత్రం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచం సమర్పయామి ఏతే ప్లదస్త్రోత్ర్యాభరణోపేత పుష్పగంధ ద్రౌపదీపాలంకారార్థాः ఇమేక్షతా సర్వోపచారాः సర్వతీర్థలం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుమాధోద్భవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయిన కరిష్యమానసకర్మణాజ్ఞాన సమాప్యర్థం విశ్వక్షేణారాధనం కరిష్యే విశ్వక్షేణం దర్బాహం చక్రచక్రసంవృతం యాప్తిం సంకేతం సుస్పర్ధవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాకమచ్చేద్ ఆగ్నేయ స్వాదిదామేత్వాషేదాత్తం యథోత్సంభో వైరాజంతే సుతనిధత్తాం దశాం దిశావిధానామనాది యామేస్తాం దందాన్ దాతోం భూ పద్మాగారమండలే స్వచ్ఛనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి తత్తత్వీం సూత్రవతీమావాహయామి వామే జయమావాహయామి తత్తత్వీ సుసక్షేణస్యైదమాసనం విశ్వక్షేణాయ నమః ఇదం పాత్రం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమం సమర్పయామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి విశ్వక్షేణ స్మృత రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణ తస్మాన్యానం భాసీత కర్మణాన్ విఘ్నశాంతే ఆరంభే కర్మణాన్ పుష్టే విఘ్నానాన్ ప్రసమాప్యజ కుర్యాత్ సౌరవారస్య విశ్వక్షేణస్య పూజనం భగవద్భిరజ్ఞాతః పుణ్యః పుణ్యాం వాచయిష్యే ఓం వాచతాం సమన్యాహం కరోమి కురుష్వాస్త ప్రోక్షితం అస్తు ప్రజాపతి ప్రేతాం ప్రేతాం భగవాన్ ప్రజాపతి శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని ఓం మతో దేవాః వందనతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామిః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధానదేవనం తమోఢమస్సభాగం సరే త్రీణిపదాచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి పశ్యేతోః వృతాని పశ్యసి ఇంద్రస్య దశకాः తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యः దివీవ చక్షరాతదం తద్వ్యప్రాసో వన్యవోజార్ధ్రవాగం దచ్చవిందతే విష్ణోర్జత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణసరస్య ద్రవిణోదా సరస్య ప్రగం సదే ద్రవిణోదా వీరవద్విషణ్ణా ద్రవిణోధారాస్తి దీర్ఘమాయు యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్భట్కరువిదాపవిషం యదా వై సూర్యవదైతి నక్షత్రం నైతి యావత్ తత్సూర్యో గచ్ఛేతి తదన్యం పశ్యేతి తావత్ గురువిదత్కారీ స్యాద్ పుణ్యాః యవకృతే ఓం భూభవతిపురోక్తష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం తండ్రిల పరిధిపరిసిన సర్వతంత్రవిషత్వం శాంతత్వం స పుణ్యామాతిరమణి పుణ్యాహం భ్రంతోః భ్రంతు పుణ్యాంకర్మణోస్తు కర్మణ పుణ్యాం భ్రంతోః భ్రంతు పుణ్యాంకర్మణోస్తు కర్మణ పుణ్యాం భ్రంతోః భ్రంతు పుణ్యాంకర్మణోస్తు స్వస్తినింద్రాద్ధస్వాసనః పూషా శువేదాః స్వస్తినస్తార్క్షరిష్ఠినమి స్వస్తినా బృహస్పతి దదాతు ఓం భూభవతిపురోక్తష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం స్థండిల పరిధిపరిసిన సర్వతంత్రవిషత్వం శాంతత్వం స పుణ్యామాతిరమణి స్వస్తిం భ్రంతాః భ్రంతు కర్మణే స్వస్తి కర్మణ స్వస్తిం భ్రంతాః భ్రంతు కర్మణే స్వస్తి కర్మణ స్వస్తిం భ్రంతాః భ్రంతు కర్మణే స్వస్తి వృద్ధ్యాస్వామ్యేనం సాంసద్యాం త్రందేవం తథైర్నోస్తు అనురాధాన్ హవిషావర్ధయంతః శతంజీవం సదస్వీరాः ఓం భూభవతిపురోక్తష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం స్థండిల పరిధిపరిసిన సర్వతంత్రవిషత్వం శాంతత్వం స పుణ్యామాతికర్మణి వృద్ధిం భ్రంతాః భ్రంతు కర్మర్దదాం కర్మణోద్ధ్యం భ్రంతాః భ్రంతు కర్మర్దదాం కర్మణారుద్ధ్యం భ్రంతాః భ్రంతు కర్మర్దదాం వృద్ధిః సమృద్ధిः పుణ్యా సమృద్ధిः ఆపోహిష్టామయభోస్థాన ఊర్జేదాదన మహేరణాయ శిక్షి యోగస్వదమార్హస్తస్య భార్యదేన ఉషతీరివ మాత్ర తస్మారంగమాపో శిక్ష్యా జిన్వద ఆపో నేధాజన
हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च कसवोजाः सुन्द्रः अग्नियागर्भं दद्रे विरूपास्तानः प्रसगस्तानः भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचरणिः यः पोतास्मनात्मा पुनन्तमादविजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वागतम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदेशताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभुयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमाप्नातु सोमस्वस्यावृणसमीचाः यमो राजाः प्रमणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातै यज्ञाय गातै यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्धं जगातु भेषजं छन्नो स्तुतपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तुरामार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासाः पुत्रमार्जयन्तां प्रदेशाहान्ति शीघ्राः पशुमार्जयन्ताम् उदेहेचां दिशा भवसुदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः मित्यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामुधोद्राद्रे नागेभ्यमार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतमहीयान् आत्मा गुहायानि तोस्यन्तः तमः कृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानुमीशम् वास्तवः स्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशानमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शस्वस्यन्ने तद्वदेशं चतुष्पदे वास्तवः स्वदेशकमया संसदा ते सक्षेमयि शरण्यागातमत्याः आवक्षेमोदया गेवृन्नो यूयं पातः सस्तविस्वदानः अमेवः वास्तवः स्वदे विश्वारूपाण्याविषन्ने सखा सेवयेदनः अनोरणीयान् मातामहीयान् आत्मा गुहायानि तोस्यन्तः तमः कथं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानुमीशम् सप्तः प्राणाः प्रभवन्तु सप्ताः सप्ताक्षः समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां नियताः सप्तसप्ता वर्णान्मा सक्षरान्मा पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मा सक्षरान्मा यथा भाषा गुरोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वर्णान्मा सक्षरान्मा शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜன கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். பக்தர்களே, இந்த நாளிலே பரம ஏகாதசியை முன்னிட்டு பகவானுடைய நாமங்களை கூறி அவர் செய்யும் லீலைகளையும் அவருடைய கைங்கரியங்களையும் பார்க்கலாம். மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்கள் தசவதாரங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. அதிலே முதல் அவதாரம் மத்ஸ்ய. தான் படைத்த இந்த உலகங்களை காக்கும் பொருள் ஸ்ரீமன் நாராயணனே பல பல அவதாரங்களை எடுத்தான். மத்ஸ்ய அவதாரம் முதலில் பல பல விற்த்தாந்தங்களை, அந்த மத்ஸ்ய அவதாரத்திலே அவர் எப்படி கைங்கரியம் செய்தார், எப்படி பக்தர்களுக்கு காத்தார் என்று பார்க்கும் பொழுது முதல் அவதாரமாக மத்ஸ்ய அவதாரம். கிருத்தயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் என்று 4 யுகங்கள். அந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்தால் ஒரு சதுர்யுகம். 1000 சதுர்யுகங்கள் ஒரு கல்பம். இது பிரம்மனுக்கு ஒரு பகல். இந்த பகலின் முடிவிலே இரவு வர பிரம்மன் தூங்கச் செல்லுகிறான். அந்த சமயத்தில் ஒரு சமயம் அசுரன் வேதங்களை எல்லாம் திருடிச் சென்று விடுகிறான். இது ஒரு புறம் இருக்க, இந்த உலகத்திலே அப்பொழுது சத்தியவரத்தன் என்ற ஒரு அரசன் தவக்கோலத்திலே ராஜரிஷியாக இருக்கும் பொழுது விஷ்ணு பக்தர் ஒருவர் ஒரு நாள் நதியில் தர்ப்பணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது நீர் ஏந்திய கைகளிலே ஒரு சிறிய மீன் வந்ததாம். அதை அவன் மீண்டும் நீரிலேயே விட்டுவிட எத்னிக்கும் பொழுது அந்த மீன், முனிவரே, பெரிய மீன்கள் என்னை தின்றுவிடும், ஆகவே என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று வேண்டியதாம். அந்த மீன் மீது கருணை கொண்டு அதை தன் கமண்டலத்தில் இட்டு ஆசிரமத்திற்கு சென்றாராம். அதற்குள்ளே அந்த மீன் வளர்ந்து கமண்டலம் போதாமல் தத்தளித்ததாம். முனிவர் பெரிய பாத்திரம் எடுத்து நீர் ஊற்றி மீனை அதிலே கிடத்தினார். சிறிது நேரத்திலேயே அந்த பாத்திரமும் போதாமல் பெரிதாக வளர்ந்து அந்த மீனை எடுத்து சென்று குளத்திலே விட்டு விட்டாராம். அது மேலும் மேலும் வளர்ந்து அந்த ஏரியில் விட்டுவிட்டு, ஹே மீனாக வந்துள்ள தேவனே, நீ யார், எதற்காக என்னை வந்து
எதற்காக என்னிடம் வந்துள்ளாய் என்று கேட்க, சத்தியவிரதரே, நான் நீர் ஆதாரிக்கும் விஷ்ணுவே. அப்படி இந்த 7 நாட்கள் பிரளயம் ஏற்படப் போகிறது என்பதை உங்களுக்கு தெரிவிக்கத்தான் வந்தேன் என்றாராம் அந்த மீன். இதோ திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். பக்தர்களே, வந்திருக்கும் தேவர்களையெல்லாம் ஆஹ்வானம் செய்து அந்த திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. நாகராஜமாவாஹயாமி, சாஸ்திரமாவாஹயாமி, சேஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி. பிரசரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம், இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, இதமாச்சும் சமர்ப்பயாமி. சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ வேதா விஸ்வநாபக ஸ்வஸ்தி தேவே ஜனமணः. ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சரோதாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः. स्वस्तेः वायुं पभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः. विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो सुरग्निस्वस्तेः देवाः वन्त्रिभो स्वस्तेः स्वस्ति नोः रुद्रः पात्वमसः. स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्येरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नोः यदे कृधि. स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः घ्नता जानता सङ्गमेमहि. स्वस्तेनन्तार्क्षमृष्टनिमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नापं वारुहेम. अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा साक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये. स्वस्तं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभं शुभम्. சங்கடஹரணா கோவிந்தா. இந்த பரம ஏகாதசி என்று உபவாசம் இருந்து பகவானுடைய கைங்கரியங்களிலே ஈடுபட்டு அந்த பகவானை செவித்தோமானால் மிக்க பலனை, அதாவது தெலுங்கிலே ஜேஷ்ட மாதம் என்று கூறுவார்கள். அதிக ஜேஷ்ட மாதம் என்றால் அதற்கு அதிகமான பலனை கொடுப்பவன் அந்த பரந்தாமன். அப்படிப்பட்ட திருமலையப்பனை செவிக்கலாம். திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே நாம் அந்த பகவானை சேவித்து அவரிடமிருந்து அதிகமான பலனையும் பெறலாம். அப்படி அந்த மத்ஸ்ய அவதாரத்திலே மீன் வளர்ந்து 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 இறுதியில் அந்த மீனானது ஒரு ஏரியிலேயே விட்டுவிட்டு பெரிய அந்த ஏரியை விட்டுவிட்டு திரும்பவும் மகரிஷியிடம் வந்து கேட்டதாம். அந்த மகரிஷி கேட்கிறாராம், சத்தியவிரதரே, நீ யார் என்று மகரிஷி கேட்க, சத்தியவிரதரே, நான் நீர் ஆராதிக்கும் விஷ்ணுவே. இந்த 7 நாட்களிலே பிரளயம் வரப்போகிறது. அப்பொழுது உங்களிடம் ஒரு படகு வந்து சேரும். அப்பொழுது தானியங்கள், மூலிகைகள் இவற்றை எடுத்துக்கொண்டு அந்த படகிலே ஏற்றிக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடன் 7 ரிஷிகளும் அதிலே வருவார்கள். பிறகு அந்த படகு திமிங்கலம் அளவு வளர்ந்த எண்ணெய் வந்து சேரும். அந்த படகை என் தலைமீதுள்ள கொம்பினில் கட்டிவிடுங்கள். பிரளயம் முடியும் வரை நான் அந்த படகை இழுத்துக்கொண்டு இங்கும் அங்கும் சுற்றி திரிவேன். பின்னல் பரமனிடமிருந்து காணாமற் போன வேதங்களையும் மீட்பேன். அதன் பிறகு மறுசிருஷ்டி தொடங்கும் என்று அறிவித்ததாம். மேலும் சத்தியவிரதரின் வேண்டுகோளுக்கு அந்த மீனானது செவிசாய்த்து பல பல தத்துவங்களை அவருக்கு உபதேசம் செய்தாராம் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு. இது அப்படி மத்ஸ்ய அவதாரம் முடிந்தது. அடுத்ததாக கூர்ம அவதாரத்திலே ஒரு வித்யாதர ஸ்திரீ தூர்வாச முனிவருக்கு மாலை சமர்ப்பித்து சேவித்தாளாம். அந்த மாலை மிக நன்றாக இருந்தது. அந்த மாலையை அணியத் தகுந்தவன் இந்திரனே என எண்ணி முனிவர் அந்த மாலையை இந்திரனுக்கு அளித்தார். செல்வ செருக்கில், அதாவது அந்த செல்வம் வந்த அகங்காரத்திலே இருந்த இந்திரன் அந்த மாலையை வாங்கி தன் யானை மீது வீசினானாம். யானை அதனை தன் துதிக்கையால் வாங்கி கீழே போட்டு மிதித்து சென்று விட்டது. இதையெல்லாம் பார்த்த மகரிஷி தூர்வாசர் கோபமுற்று இந்திரன் தன் எல்லா செல்வத்தையும் இழக்கும்படியாக சாபமிட்டார். ஏற்கனவே அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையே விரோதம் இருந்தது.
இப்பொழுது எல்லாம் இழந்த தேவர்கள் அசுரர்கள் ஓட ஓட விரட்டி அடித்தார்களாம். தேவர்கள் பிரம்மனிடம் சரணடைய அவர் எல்லோருடனும் சேர்ந்து மகாவிஷ்ணுவை சேர்ந்து சேவித்தார். மகாவிஷ்ணு தேவர்கள் சாகா வரம் பெற்றாலே அசுரர்களை வெல்ல முடியும். அதற்கு வேண்டிய அமிர்தம் திருப்பார் கடலை கடைந்தால் கிடைக்கும். கடலை கடைய கடைய மந்திரமலையை கொணர்ந்து கடலில் வைத்து கடைய வேண்டும். இந்த காரியத்தை தேவர்களால் மட்டும் செய்ய முடியாது, அசுரர்களையும் கூட சேர்த்து கொள்ளலாம் என்று அருள் வழங்கினாராம். இதை அடுத்து தேவர்கள் அசுரர்களின் உதவியை கேட்க பொழுது அமிர்தம் தங்களுக்கும் கிடைக்குமே என்ற ஆசையினால் அசுரர்களும் சரி என்றனர். இருவருமாக சேர்ந்து மந்திர மலையை தூக்கி வந்து பாரம் தாங்காமல் வழியிலேயே அது கீழே விழ மகாவிஷ்ணு அங்கே வந்து தான் ஒருவனாகவே அந்த மலையை தூக்கி கருடன் மீது வைத்து பார்க்கடலில் கொணர்ந்து வைத்தாராம். மலையை மத்தாகவும் வாசுகி என்ற பாம்பை கயிறாகவும் உபயோகித்து இரு புறமும் கடலை கடைய ஆரம்பித்தனர். முதலில் வந்தது என்னவென்றால் ஆலகால விஷம் அமிழ ஆரம்பித்தது. அப்பொழுது அந்த மகாவிஷ்ணு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆமையாக அவதரித்து கடலின் கீழே சென்று மலையை தன் முதுகின் மீது ஏற்று உதவினாராம். இப்பொழுது மறுபடியும் மலையினால் கடைய ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் மலை இரு பக்கமும் ஆடி கவிழ ஆரம்பித்தது. இப்பொழுது மறுபடியும் மகாவிஷ்ணு ஒரு பெரிய உருவம் கொண்டு மலையை மேலிருந்து பிடித்து கவிழாமல் இருக்கச் சென்றாராம். அந்த பார்க்கடல் கடையப்பட்ட பொழுது கடலில் இருந்து முதலில் அலகால விஷம் வெளிவந்தது. அதன் நச்சுக்காற்றினால் பெரிய ஆபத்து விளைய சிவபெருமான் முன் வந்த தான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய கழுத்திலேயே நிறுத்தி கொண்டாராம். இதனால் அவரின் கழுத்தே நீளமாகிவிட்டது. அதன் பிறகு கடையப்பட்ட கடலில் இருந்து காமதேனு எனும் தெய்வீக பசுவும் அதன் பிறகு பால் முதலியவை கொண்டு யாகங்கள் செய்து அதை தங்களுக்கு உடன் வைத்து கொண்டார்கள். இப்படியாக கூர்ம அவதாரம் ஆரம்பமாக மத்ஸ்ய அவதாரம் முடிந்து கூர்ம அவதாரம் ஆரம்பமாகியது. இதோ திருவேங்கடமுடையான் திருமலையிலே எழுந்து தன்னுடைய அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அந்த திருமலை அப்பனையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று சேவித்து கொண்டு கரம் கூப்பி இந்த ஏகாதசி அன்று கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு பெருமாளை தரிசனம் செய்து திருவடிகளை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ நாராயணா, கோவிந்தா, மாதவா, கேசவா என்று அந்த பரந்தாமனை சேவிப்போம். அதைத் தொடர்ந்து அந்த பார்க்கடலை கடையும் பொழுது உச்சைஸ்ரவம் என்னும் அழகான குதிரை வெளியே வந்தது. அசுரர்களின் தலைவன் தனக்காக வைத்து கொண்டான். அடுத்து ஐராவதம் என்னும் யானை தோன்றியது. அதை இந்திரன் தனக்காக வைத்து கொண்டான். அடுத்து கௌஸ்துபமணி தோன்றியது. இதை ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஏற்றுக்கொண்டார். அடுத்து பாரிஜாத மரம் ஒன்று தோன்ற தேவர்கள் இதை ஏற்றனர். அடுத்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தோன்றி மகாவிஷ்ணுவின் திருமார்பை அடைந்தாள். அடுத்து தன்வந்திரி அமிர்த கலசத்துடன் வெளித்தோன்றினார். இந்த அமிர்தத்தை பார்த்தவுடனே இது தனக்கே வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் சண்டையிட ஆரம்பித்தனர். இதோ ரக்ஷாபந்தனத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். ऋषि ओं यतोन्मिन्द्रं सवाहं शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाचैर्वाहान् मुक्तु मयि देवाद्रेण माजन्तां मय्या शिरस्तमयि देवौति देव्या होतारामणन्तु पूर्वैरिष्टास्याम तन्वासुवीराः हव्यागोतसत्यामन सौम्यस्तु येन मानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासु अधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामि ध्यां बाप्मानं सन्ना माता पृथिवी त्वकसाता पूतः दिनेन सौम्या क्षणध्वगं वृषणा होतगं सदे अष्टाबन्धगं वृषणा विदाहरं येन देवासो भुवनश्रेतहिंचतपसोज्जनिष्यतेः अग्निमश्वत्थादेव्यवादी समीगर्भार्जने व्योमयो भूः
उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यः हव्यमनः प्रजानन् आयुः प्रजागम्रेमस्माभिः अग्नाय हिदेर्नानो विदाति निहोता सुचोरिषि ऐतेयं स्वा अनुतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवदेवप्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्रसादिमस्रच वेणावः सबुद्ध्यात्मासविष्टासश्चोन्मतश्चवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनुं सोमार्वन्तमास सोमो वीरङ्कर्मणं दातु साधन्यं पृथगं सभेयं पितृश्रावणं ददातस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागसृष्टियजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदां यत्रलोकस्तत्रयमं विघ्नं यजमांसदेहि ॐ प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागसृष्टियजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदां यत्रलोकस्तत्रयमं विघ्नं यजमांसदेहि ॐ प्रोक्ष पवित्रेः स्व वैष्णव्येस्तु यज्ञेः स्व वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्तः परशरस्य पवित्रेः स्तः वैष्णव्यो देवसविता प्रसवपुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्तरस्मेरापो देवीरग्रे पुवोग्रे पुवोग्रें यज्ञं यथाग्रे यज्ञमतिन्दत्तैष्मानिन्द्रवन्तूर्ये यूयमिन्द्रनिध्वमस्तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तु वोसि दक्षिणतः विष्णोस्तु वोसि पश्चिमस्थो धत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु वोसि कृतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानमातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रणया सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रणया दक्षप्रदौ ब्राह्मणे तीर्थेन प्रजातमावाहयामिन्द्रमावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्नि सोममावाहयामि प्रजातमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयं इन्द्रमावाहयं वसुनावाहयं मर्तमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपावसृष्टा ॐ श्रीविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं आदित्यानावाहयं विष्णुनामावाहयामि पूषणमावाहयं कक्षमावाहयं सोममावाहयामि उपासना यज्ञमावाहयामि ज्ञेदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपां इन्द्राष्टनपां ज्ञेष्ठनपां सोमाष्टनपां ज्ञेष्ठनपां सोमाष्टनपामि अग्निशोमाहाभ्यानिष्ठनपामि प्रजापतेष्ठनपां ब्रह्मणेष्ठनपां इन्द्राष्टनपां वसुभ्यष्टनपां मरुद्भ्यष्टनपां रुद्रेभ्यष्टनर्पामि अपोपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपां आदित्येभ्यष्टनपां सिभ्याष्टनपां पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञेदेश्वेभ्यो देवेभ्यष्टनर्पामि सर्वदेवेभ्योष्टनर्पामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरुन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतमसवारणमसि अन्तर्दमक्षान्तरधारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्परिस्वाब्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्परिस्वाब्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्तासुविदापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्याङ्कृतं स्पर्शयित्वा अध्यच्च अक्षताम् आज्याञ्चरुभिः अक्षताचरिभिरिमामे ज्ञष्टगाधेन सन्त्वेकाच शतञ्च सहस्रं चायुधं च नीतं च प्रेतं च अर्बदं च निर्बदं च धेनवस्सन्तु इन्द्राय नमः अग्नेय नमः यमाय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः विरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनस्वा नुतेन मनस्वा सरस्वतेन मनस्वा देहविदप्रतवा षष्ठशतसहस्राणितमक्षमर्भतमानया अन्त्यद्मा आत्माजातवेदस्तेनेतस्तवधेजेत् वध्यजास्वान् प्रजापशुब्रह्मोत्थेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निकुण्डे ब्रह्मन् संयुक्तम् आधास्य आधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षेत्र सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्या विगार्य ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा तेन मुखस्थाः
सरस्वते नमस्ताः देवताप्रासाभिः ओं भूः अतिपूर्वोक्तमिष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारभमान्ते सर्वन्तर्पर्यातृणात् प्रास्तात् मुतो देवादिविष्णुं करिष्ये तेन मन्यस्वा अनुदेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवतं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्रेतोः व्रतानि विश्वसे इन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग्स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यपोटार्धवागं तत्समिदते विष्णोर्यत्परमं पदं स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము दिशां विष्णुपत्निहोरास्येषानासादोया मनोताः बृहस्पतिर्मातरिस्रोता वायुस्सन्धवाना वाता दिनो कृन्तु इष्टं वो दिवो वरुणः पृथिव्यास्येषानां जगतो विष्णुपत्नी संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदपि जानदे संकल्पमानं प्रकल्पमानं प्रक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोपसीव आयुत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् स्तम्भान् ज्योतिष्मागुस्तेजस्थानाथभग्रस्तपन्न रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
ब्रूतस्मात्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूततं तस्मै समस्तवेदार्थ विजय विघ्नसे नमः। सुदुष्पति पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोन्नमम्। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्याप्रशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीयरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भूर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डशुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजवती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते इंद्राग्नि यवनऋते वरुणवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षसरासर्पदधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवरूहते जम्बूप्लक्षकुचक्रं च शाकसान्मलिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्य पारयात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजते भारत किंपुरुषहारी लाभृतभद्राश्वकेतुकमालकरमणकगुरुवर्षाख्य न वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामादिसङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलावर्षक्रमेण सर्वराश्यवकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीणीकुत अग्निष्टमतिराप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकद पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपरोवणैः भुग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्ठादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आङ्गिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरेकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय
दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्तवानारुविदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यामि विष्णुवेदुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरस्वरूपास्ताद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु தே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கைங்கரியங்களை செவித்தோம். அடுத்து இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்கலாம். இன்று அந்த எம்பெருமானுடைய நாமங்களை கூறி அவனுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து அவனை சேவித்தோம் என்றால் இந்த பரம ஏகாதசி என்று பவித்திரமான பலன்களை நமக்கு அளிப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே இந்த பகவானை செவிக்கலாம், அவனுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறலாம். விஷ்ணுவின் நாமங்களுள் ஒன்று புருஷோத்தமன். இந்த பெயருக்கு உத்தமன், நேர்மையானவர், அனைத்திலும் சிறந்தவர், உயர்ந்த கடவுள் என்று பல பொருள்கள் உண்டு. அப்படி புருஷோத்தமன் என்ற பெயரிலே அவர் எழுந்தருளியுள்ள திருத்தலங்களுள் ஒன்று ஒரு மாவட்டத்தில், அதாவது தமிழ்நாடு மாவட்டத்திலே, தமிழ்நாடு மாநிலத்திலே ஒரு மாவட்டத்திலே 1000 ஆண்டுகள் முன்பு அமைக்கப்பட்ட கோவிலில் அந்த புருஷோத்தமன் என்ற நாமத்திலே எழுந்தருளியிருக்கிறார் அந்த எம்பெருமான். அந்த ஊர் மிகவும் சிறப்பானது. ராஜராஜ சோழனால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட அந்த காலத்திலே பாண்டிய நாடு சோழர்களின் ஆளுகை கீழ் உட்பட்டிருந்தது அந்த கோவிலானது. அப்படி விசேஷமான பொதிகை மலை உற்பத்தியாகும் தாமிரபரணி பாபநாசம் தொடங்கி பல்வேறு ஊர்களில் பயணித்து இறுதியில் வங்காள விரிகுடாவை அந்த கடலில் கலக்கிறதாம் அந்த நதி. அது பாய்ந்தோடும் இடங்களின் கரைகள் நெடுகிலும் அமைந்துள்ள திருக்கோயில்கள் ஏராளம். அவற்றிலே அந்த நாகரீக வளர்ச்சி, கலாச்சாரம், பண்பாடு ஆகிய அம்சங்களை கொண்ட ஆண்டாண்டு காலமாக உணர்த்தி நிற்கும் அந்த அடையாள சின்னங்கள் அந்த கோவிலில் தென்படுகிறது. அப்படி சிறப்பு வாய்ந்த அந்த கோவிலில் அமைந்துள்ள, அதாவது நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கும், எழுந்தருளியிருக்கும் அந்த பகவானுடைய பெயர் புருஷோத்தமன். புருஷோத்தம பெருமாள் கோவிலில் தாமிரபரணி நதி தீரத்திலே அமைந்த முதல் பெருமாள் கோயில் என்ற பெருமையும் பெற்றுள்ளது. அப்படி அந்த கோவில் பகுதியில் அந்த காலத்திலே ஊர் இருந்தது. பருவ மழையின் பொழுது
அடிக்கடி ஊருக்குள் வெள்ளம் புகுந்து விடுவதால் அதிகமான பாதிப்புகளை மக்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்ததால் ஒரு கால கட்டத்திலே ஒட்டுமொத்த கிராம மக்களும் அங்கிருந்து காலி செய்து சற்று தள்ளி மேடான பகுதிக்கு சென்று அங்கே வாழ்ந்து வந்தார்களாம். அப்படி அந்த ஊரில் முழுவதும் இருந்த பச்சை பசேல் என்ற நெற்பயிர்களை பார்க்கும் பொழுது மனதிற்கு மிகவும் இனிமையாக இருந்ததாம். அப்படி பூத்து குலுங்கும் செழிப்பான வயல்வெளிகளிலாக இருந்து நான்காபுறமும் பச்சை பசேல் என்று இருக்கும் அந்த தலத்திலே கிழக்கு பக்க வாசல் சால கோபுரத்தில் அமைத்து எழிலாக காணப்படும் அந்த கோவிலிலே பகவான் எழுந்தருளியிருக்கிறார். முக மண்டபத்திலே பலிபீடம், செப்பு கவசம் போர்த்திய கொடிமரம், கருடாழ்வார் மண்டபம் ஆகியவை அமைந்துள்ளன. அடுத்து கர்ப்ப கிரகத்திலே 8 கரங்களுடன் புருஷோத்தம பெருமாள் இடது மடியிலே அலர்மேல் மங்கை தாயாரை இருத்தி இடது காலை மடித்து வலது காலை தொங்கவிட்டபடி அமர்ந்த கோலத்திலே காட்சியளிக்கிறார். கருடனின் ஒரு கரம் பெருமாளின் வலது காலை தாங்கியிருக்க மற்றொரு கரம் மலர்ந்த தாமரை மலரை ஏந்தியுள்ளது. பெருமாள் சிரசின் மேல் 7 தலை கொண்ட கார்கோடகன் குடை பிடிப்பது போன்ற படமெடுத்து நிற்கிறது. அலர்மேல் மங்கை தாயார் இடது கரத்திலே தாமரை மலரை தாங்கிய வண்ணம் காத்திருக்கிறாள், அங்கே எழுந்தருளியிருக்கிறார். இவ்வளவு சிறப்பான கோவிலிலே மற்றொரு விசேஷம் என்னவென்றால், உற்சவ பெருமாள் கருட வாகனத்திலே எழுந்தருளுவார். ஆனால் இங்கு அபூர்வமாக மூலவர் பெருமாளே தாயாருடன் கருட வாகனத்திலே சேவை சாதிப்பது மிகவும் விசேஷம். எனவே இவர் நித்திய கருட சேவை பெருமாள் என்றும், பெருமாளின் 8 கரங்களிலே சங்கு, சக்கரம், வாள், வில், அம்பு, கேடயம் என ஆயுதங்கள் காணப்படுவதால் இவர் அஷ்டபுஜ கர பெருமாள் என்று சேவிக்கப்படுகிறார். அப்படி அது தவிர அலர்மேல் மங்கை தாயாருடன் மட்டும் காட்சி அளிப்பதால் இவரை ஏகபத்னி விரதனாக ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் அம்சமாக கூட கருதுகிறார்கள். கருட பகவான் பெருமாளை தரிசிப்பதால், கருட வாகன பெருமாளை தரிசிப்பதால் குடும்ப கஷ்டங்கள் நீங்கி அனைத்து நலன்களும் கிடைக்குமாம். அப்படி பிரம்மா, இந்திரன் மற்றும் பல முனிவர்கள் இங்கே வந்து சேவித்ததாக கூறப்படுகிறது. புருஷோத்தம பெருமாளை நினைத்தால் திருமணத் தடை விலக, சந்தான பாக்கியம் கிடைக்கவும், வேலை வாய்ப்பு அமையவும் என்று கூறப்படுகிறது. பல்வேறு கோரிக்கைகளை இந்த பக்தர்களுக்கு தீர்க்கிறான். அந்த நீராஞ்சன தீபம் என்ற ஒரு ஏற்றி உருக வேண்டிக் கொள்ளுகிறார்கள். இப்படி அந்த பகவானை செவிக்கும் பொழுது மற்றொரு விசேஷம் என்னவென்றால், உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட பக்தர்கள் கூட இந்த கோவிலிலே தரப்படும் அபிஷேக தீர்த்தத்தை வாங்கிச் சென்று பருகி பெற வியாதிகள் கூட விரைவிலேயே குணமாகி விடுகிறதாம். அப்படி இங்கே அந்த கர்ப்ப கிரகத்தின் மேல் இருக்கும் விமானத்தின் பெயர் இந்திர விமானம் என்றும், இந்த விமானத்தின் முதல் நிலை ஸ்ரீமன் நாராயணமூர்த்தியின் தச அவதாரங்களையும், 2வது நிலையிலே இந்திரன், ருத்ரன், பிரம்மனையும், கிழக்கே ஹயக்ரீவ மூர்த்தியையும் கொண்டுள்ளது. இப்படியாக சிறப்பு வாய்ந்த அந்த பகவான் மிகவும் விசேஷமான பக்தர்களை அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கிறார் புருஷோத்தம பெருமாளாக. அதுவும் கருட வாகனனாக தாயாரை தன்னுடைய மடியிலே தாங்கிக் கொண்டிருப்பவராக. இவ்வளவு விசேஷங்கள் அமைந்த அந்த புருஷோத்தம பெருமாள் அங்கே, அதாவது தமிழ்நாடு மாநிலத்திலே அம்பாசமுத்திரம் என்ற தலத்திலே அவர் வீற்றிருக்கிறார். அவரை அங்கே மானசீகமாக சேவித்து கொண்டு இதோ திருமலையிலே வேங்கடவனை சேவிக்கலாம். ஏழுமலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த விசேஷமான நாளிலே ஒவ்வொரு தலத்திற்கும் மானசீகமாக சென்று அந்த எம்பெருமானையும் செவிப்போம். இதோ இங்கே திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் சேவிக்க இருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவித்துக்கொண்டு மாங்கல்ய தாரணத்தை பார்க்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்தா. இதோ அந்த பிராட்டிமார்களுடைய கழுத்திலே
அந்த மாங்கல்யத்தை அர்ச்சக சுவாமி தாரணம் செய்கிறார். प्रजापतिस्तोमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुताम् अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रियानिर्याय श्रियम्बजो जलदृभ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमाजन् भवन्ति सत्या समिधां तद्ब्रूः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्तोमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. अवर्णयः समानायुः प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्ने वृणस्यद्वान् देवसेडवयाश्रेष्ठाः यजुष्ठो पंडितमस्वशिडानो विश्वाद्वेषां च प्रमुत्य स्वाहा तन्नाग्ने मो भवति नेतिस्वास्यापसौव्यष्टौ अवयक्षुणवर्णम्राणुविहिं सुहोनेधि स्वाहा तमग्ने अयास्त्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वेजग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा
ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ ఐతేన ముఖస్థాః హనుమతే నమః సరస్తే నమః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః అతివిరోక్తష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నమతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసవితః ప్రసవ ఇమాం లాజాంతే ఆర్జమభిగార్యాం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్త్రేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదేనాగుంసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగుం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారాధన్యా ఇవ అధిగాహే మహేద్భిషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోహదేనాగుంసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగుం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారాధన్యా ఇవ అధిగాహే మహేద్భిషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ పుభ్యంతు సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోహదేనాగుంసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగుం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారాధన్యా ఇవ అతిగాహే మహేద్భిషః ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ ఐతేన ముఖస్థాః హనుమతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూవతివిరోత్కష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వమంతరుపర్యాదృనాత్ ప్రాస్తాత్ హుమతోదివైద్యవిష్ణుం కరిష్యే తేన మునిస్వా నమతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసవితః ప్రసవ ఓం మతో దేవాः వంతనోదవిష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధానుదేవతం సమూఢమస్వాగుంసరే స్వాహ त्रीणि पदां चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वेदोः व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवीव चक्षुषा तद्गस्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोऽद्यत्रं पदग्स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वाहा ऐतेन मगस्वाहा नमतेन मगस्वाहा सरस्तेन मगस्वाहा देवसवितः प्रासावीः ओं भूभवतिपुरष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं पृष्ठा तन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तीर्णं विद्यानेन महागरम् अग्निस्य षष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते सुतहोतादीनां कामानां समुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्पदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो दूताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादुष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तोत्रदाः जातवेदा विचर्षणे स्वाहा पुनर्ग्निचक्षुरात् पुनन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्राजं दीक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा वेदन्द्रष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्धै स्वाहा सर्वसमृद्धै स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कर्मत्नोः अग्ने अतिरिक्तं कर्मणो क्षेत्रमग्नः पर्वान् प्रतिनिधिकल्पयन् स्वाहा कृतातिर्देवान् स्वाहा यथोः शशिधिमे स्वाहा समिधसि तेजोस्तेजोमयधैः स्वाहा यमस्तिमे त्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यसदिमे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमसदिमे चित्तमे भाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तहिवा सप्तर्षि सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा जिन्ति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्रेष्ठे भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं द्योजीर्णं पृथिवीजीर्णं
ओषधि वनस्पति दर्भाशेषनग स्वाहा समन्तां भयवशातेन समादित्यै वसुभिस्समरुद्भिः स्वमिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तैष्वा सप्तयः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः शुद्धात्वा इन्द्रिय सप्यो निरावनस्तावतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो द्वेस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषुध वनस्पति गन्धर्वाश्चर्यतिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां तेन मुखस्ताः देवहृदः प्रासाभिः पवित्रमसे पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसे पूर्णं मे भूयात् स्वाहा उत्तरतो विष्णु सनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां पृषधयश्च दिवं गच्छतो नरुष्टिमेरे स्वाहा आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां पृषधयश्च दिवं गच्छतो नरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्षसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्थानवोच्येदादना योपश्वतमोरदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो सक्ष्याय जन्मधः आपो जनेधाजनः यत्तेऽग्ने देवस्येनाहं देवस्य भूया समस्तेऽग्नि वर्चस्येनाहं वर्चस्य भूया समस्तेऽग्नि हरस्येनाहं हरस्य भूयासम् मयि मेधां मयि प्रियां यज्ञस्येजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योद्धातो दातु योस्य सूर्यं दृशे देवदगान् मातो नवाः बुद्धारमाणस्य समावृषपोरोहिताक्षसूर्योय पश्चन्मनसा पुनातु वञ्च मे सदस्य मे ज्ञपते नमश्च यत्तेः न्यूनं तस्मै तिरुवृत्तं तस्मै धीर्मः बालकदम्बा जगदम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा होत्रहीनम्बा वृद्धतारुपाग्ने जातवे स भगवान् प्रज्वलितवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वारुद्ध्यात्मनावात् प्रतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुरोभारं निवेदयामि सर्वं श्रीभुवनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகூத்தியை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கணவன் விருத்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். அதாவது அந்த பகவானை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு காணுகிறாள். அந்த கனவிலே
விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே வாரணமாயிரம். 11 பாடல்களை வாரணமாயிரமாக திருத்தி அந்த கனவின் விற்த்தாந்தங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். பக்தர்களே, செவிக்கலாம் வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை. இந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. மாலா பரிவர்த்தனம் என்றால் ஒவ்வொரு சுப காரியங்களுக்கும் புஷ்பங்கள், அக்ஷதை, துளசி அதாவது திருத்துழாய் ஆகியவற்றை சமர்ப்பிக்கிறார்கள். அப்படி அந்த புஷ்பங்களை பறித்து வந்து மாலைகளாக மாற்றி பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள். அப்படி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாலைகள்தான் இப்பொழுது பரிமாற்றப்படுகின்றன. பக்தர்களே, இதோ திருமலை அப்பனுக்கு சமர்ப்பித்த மாலையானது பிராட்டிமார்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. அந்த பகவானுக்கு சமர்ப்பித்த மாலை இப்பொழுது கொண்டு சென்று முதல் பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பிராட்டிக்கு மாலையை சமர்ப்பித்து சேவிக்கிறார். தொடர்ந்து அந்த மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமான் திருவேங்கடவனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. செவிக்கலாம் திருவேங்கடமுடையானுடைய மாலை சமர்ப்பணத்தை. ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த திருமலை அப்பனுக்கு சாத்திய மாலையை திரும்பவும் பகவானுடைய மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டி சூடி கொடுத்த நாச்சியார் ஆண்டாள் என்று கூறப்படும் அந்த பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ பூமி பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கும் வேளையிலே தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவிக்கலாம். அந்த தாயாரை செவித்து கொண்டு அதே மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரி வாசா வேங்கடவனே திருமலை வாசா மலையப்பனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்திவிட்டு அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. சேவிக்கலாம் இப்பொழுது அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை. அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அந்த பகவானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் தலம்பராலு கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம் தலம்பராலு கைங்கரியம். மூவரின் சிரசின் மீதும் அந்த அக்ஷதையை தூவுகிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தரா ரமண கோவிந்தா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.